लिए साझा तौर पे मानी जा सकती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, यानी कि पूरी दुनिया हमारा घर है और हमें मिलकर सामूहिक तौर पर उन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए और उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए। जिस जी 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 टीना। Okay, so we will come back, Amrendra, and understand from you about what kind of views have emerged once the thematic discussion gets over. There are two sessions lined up for today. The remaining two will take place tomorrow, the final day of the summit. But let me bring in Dr. Balakrishnan into the discussion. Dr. Balakrishnan, all in all, the Prime Minister's speech today encapsulated the past wherein he talks about the glorious history of India, India being the mother of democracy, about the present successes that India has seen. He mentioned the Chandrayaan, he mentioned the success of the G20 summit, and then he envisions a future which is, of course, which grows sustainably. We see a sustainable future, but also one which is free of conflict, free of terrorism. And how significant do you think was the Prime Minister's address to a gathering which included the presiding officers of parliaments of all important countries, also parliamentary delegates from at least more than half of the world? Yeah, it is an important occasion, and I think the Prime Minister maximized the whole impact of his inaugural speech. See, you have to remember that this is a gathering of the heads of legislative bodies of all the G20 countries. So the head of the legislature is equal to the head of the executive and also the judiciary, separation of powers. So this meeting is as important as the G20 Leaders Summit because it is the head of the legislative organs of the G20 countries which are meeting here. Now, of course, his speech was very well, had a very good impact. He brought out the very large size of the Indian electorate, the diversity of the electorate, and also the fact that the participation of the electorate in the elections has been very good, around 70%. So this is, he paid a tribute to the people's enthusiasm for participating in the elections, despite the fact that they are living in remote villages sometimes and may not be so highly educated. They have taken keen interest in the elections. And so he invited the G20 countries to come and observe the 2024 elections, which is once again be the largest elections in the history of mankind. So that was very well put. And he also explained how the conduct of the elections has improved enormously through the introduction of technology, the voting machines and so on. So this is a very good pitch to make because in many countries now, they are showing interest in partnership with our election commission to help them to improve their election conduct. So Election Commission of India has actually got a lot of inquiries from other countries to help them to improve the elections, and this could translate into concrete benefits for us in terms of exports of EVMs and other things. So that was another important point. And of course, the third point, he said that the Parliament of India has opened the door to increase participation of women in not only the national parliament, but also at the state level. And he also mentioned that at the local government level, women's participation has been increased. Of course, this will take some more time to actually happen. Then he, of course, said that the biggest enemy is terrorism, as far as parliamentary democracy is concerned. And of course, he reiterated that can be no compromise with any form of terrorism for any reason whatsoever. Now, as the meeting goes, you rightly said there are four sessions, 2 of them today and 2 of them tomorrow, and then there'll be a final declaration adopted. Of course, we expect the Ukraine issue maybe to be there somewhere in the room, but the new issue which has emerged is the conflict involving Hamas and Israel. Right. So there, the head of the IPU has already issued a statement, basically in which he has deplored the loss of lives and asked for protection of civilians. So we have to see, because this is a very recent event and it is coming into this this is the first major forum that is happening. So it is very likely that at least some of the Arab countries and others may use this forum to express their views on what is happening between Hamas and Israel. So we have to see how that plays into the proceedings. बिल्कुल डॉक्टर बालाकृष्णन, जाहिर तौर पर ये तमाम बड़े संदेश हैं जिनका अपने आप में असर भी बहुत गहरा होगा आने वाले समय में। योगेश गुप्ता जी, जब हमने आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री का संदेश देखा, हम जानते हैं कि हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद का जो मुद्दा है वो कहीं धूमिल ना पड़ जाए, इसलिए इसको बार बार
एक केंद्र में रखना भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश रही है। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, ये बात अब दुनिया भी मान रही है। जिस तरह से उन्होंने भारत में इलेक्शंस का जिक्र किया है, हम जानते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित आम लोग ही होते हैं, और डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने पसंद से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। जब हम डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की बात करते हैं, वो दिखाता है कि दुनिया भर में आधी से भी कम आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक देशों में रह रही है, और जब हम फुल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये आंकड़ा और कम हो जाता है, ये करीब 10 से 12% हो जाता है। ऐसे में लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, इसको लेकर बात को बार बार आगे रखना, ये दुनिया के लिए इस वक्त कितनी बड़ी जरूरत? आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, मैं फॉरेन सर्विस में रहा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत की जो और देशों में जो इज्जत है, जो रेस्पेक्ट है, उसका पहले जो है एक मुख्य कारण, एक मुख्य बिंदु ये था कि भारत जो है, अनलाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज, भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो है ओवर द इयर्स वो मैच्योर हुई है, डेवलप हुई है, मैच्योर हुई है। हमारे यहाँ जो पावर का ट्रांसफर है आफ्टर ईच इलेक्शन वो स्मूथली होता आया है। तो ये भारत का जो है बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, अचीवमेंट रहा है। और क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है समिट है G20 मुल्कों का, तो ये जो है वो जरूरी था कि प्रधानमंत्री जी जो है इस बात को सामने रखते। और ये जो है दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्पीच का एक बड़ा हिस्सा जो है इसके बारे में उन्होंने रखा और बताया कि भाई किस तरह से हमारा पुराने ट्रेडिशंस थे वो ओवर द इयर्स जो है मैच्योर हुए हैं, और किस तरह से जो है वो हमारे यहाँ जो है पार्टिसिपेशन इलेक्शंस के अंदर बढ़ता जा रहा है। और फिर अब हमने किस तरह से जो है विमेन को जो है इसमें रिजर्वेशन दिया है, जिससे कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली वगैरह में बढ़े। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु था उनकी स्पीच का, और ये बहुत अच्छा वेल रिसीव्ड हुआ है। Okay, Ambassador, coming now to the thematic session, Dr. Nayan, which is currently underway, and of course the presiding officers, the parliamentary delegates are sharing their views on the first theme, which is accelerating SDGs. This has been one of the key priorities of India during its G20 presidency, but the status of SDGs is in a bad state if you look at the progress, just about 12% on track, and we've already, in terms of time frame, we've already crossed the halfway mark. What is the roadmap that India provides when it comes to accelerating the SDGs? Look, India has been quite active on this front, and you are quite right. It's only 20% of the goals have been fulfilled, or you can say have been realized. So this is one major challenge which the world is facing, and this challenge has been reflected in the declaration also. I will read the declaration. If you go through the entire body text, you will find that at almost all places there is an attempt to address sustainable development goals. There are several goals like climate change, 13, then peace and security, Prime Minister talked about it. It is also one of the goals. Similarly, women's empowerment, gender equality. So all these things you will find manifested in the document. So the issue is how to take it forward and who will take it forward. So obviously, the developed world is supposed to provide the financial lead or give the financial lead to the goals, which we have been complaining, and developing world or global south, whatever you call it, has been complaining that they are not fulfilling their obligations. They are not giving their contributions so that all the goals are realized. But there are other complicated issues. They see the world or see the problems from their own perspective. And that perspective needs to be reconciled to the realities of the time. So that is to be done. And in fact, when I just talked about, when this G20 forum was conceived, when it was conceived, then the order was general. Many theoreticians call it the Western global order, which try to accommodate all the authoritarian systems, and they all work to just strengthen the order, Western order, which is predominantly the global order. So whatever you call it, or whatever way you see it, the idea was how to provide stability to this order,
you call it global order, you call it Western order, and the challenges which are coming. And one of the challenges is how to provide a sustainable development to the large population of mankind. Right. And this population is deprived of basic needs, then you just don't think about the stability of the systems. There will be multiple crises. So you have to cater to the idea, the need of this multiple crisis, which is generating or degenerating the system. So this problem is to be done. And now when we talk about bridging the gap, I think this is the philosophy of G20. Several gaps are existing in the world, and these gaps need to be bridged. And in fact, this was the focus. Once you recollect the statements made by different leaders, including our Prime Minister and other people, they say how to bridge this gap. So this gap needs to be bridged. And sustainable development goals or fulfilling the sustainable development goals is the most important criteria for bridging the gap. When you say bridging the gap, that takes me to the next point, and which I would like Dr. Balakrishnan to put his views forth on. The fact that towards bridging the gap, India did actually do a remarkable job. We included the voice of the Global South. We managed to get the African Union into the G20 fold. But until the Global South, Global North divide persists, Ambassador, when we talk about achieving common goals, it will remain a distant reality. So how will India ensure that all of this divide that persists, at least geographically, is not there in our approach towards addressing these global challenges? The SDGs, it is right that there has been a shortfall in performance. And the COVID crisis for the last 2 years has been a problem. Right. So there is a need to accelerate the SDGs. The Leaders Summit has clearly said we should accelerate the SDGs. And part of the solution is the increased flow of funding for development. But that is only part of the story. Whatever external funding comes for development is only a small fraction of what countries themselves spend in their budget and in their economy. Now, to achieve the SDGs, for example, a country like India, it is not enough that the central government or the government of India talks about SDGs. You have to mainstream the SDGs into the state government agenda and go down to the districts and localize the SDGs. Have you ever seen the SDGs become an election issue in India? So you have to mainstream this whole thing, right, so that the people will ask questions as to how much have you done to achieve the SDGs. So that is much more than the flow of resources, is the kind of commitment of all stakeholders plus the government of all levels to do it. Shortage of funds and all that can only be an excuse for a while, but the main effort has to be a national effort by all stakeholders. And unless this is mobilized and mainstream, we will continue to face the problem of gaps in achieving the targets. योगेश गुप्ता जी, जो बात डॉक्टर बालाकृष्णन ने कही है कि हमको ये सारा एजेंडा लोकलाइज करने की ज़रूरत है, भारत के प्रयास आपकी नज़र में, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन्हें अचीव करने की बात करते हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? कुछ एक उदाहरण दे तो, अगर टीबी मुक्त दुनिया की हम बात कर रहे हैं, 2030 का एजेंडा है, लेकिन भारत ने उसके लिए 2025 का लक्ष्य तय किया हुआ है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महिला आरक्षण कानून पास हुआ है और भारत और आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। लोकलाइज एजेंडा करने की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर अब हम एस्पिरेशनल तहसील तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत जिस तरह से राह दिखा रहा है या अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो भारत की आबादी है वो इस वक्त एक सोर्स के हिसाब से अब सबसे ज़्यादा हो गई है। मतलब 140 जो है बिलियन हमारी आबादी हो गई है। तो इतनी बड़ी आबादी का जो मुल्क है, उसको लिए उसमें जो लोग के स्तर को उठाने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, काफ़ी मेहनत चाहिए। और ये सब इश्यूज, जैसे अभी मेरे साथी एम्बेसडर बालाकृष्णन ने कहा, ये हमें मेन स्ट्रीम करने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे, बल्कि स्टेट और नीचे स्तर के लेवल के प्रोग्राम्स पे भी। तो बहुत मैसिव एफर्ट इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आप गरीबी का देखें
तो गरीबी के स्तर जो है वो पहले 1990s में अंदाजन 45% के करीब थी आंकड़ों के हिसाब से, जो कि अब घट के 17% के अराउंड आ गई है, 17-18% के अराउंड आ गई है। इसी तरह से हंगर वगैरह के बारे में अगर हम फिगर्स लें तो पहले जो है 2004-2005 के अराउंड 18% के करीब थी, जो कि अब घट के 14% के करीब आ गई है। तो अगर हम आंकड़ों के ऊपर देखें तो हमने काफी कुछ जो है वो सोशल सेक्टर्स में, चाहे खाने का हो, पॉवर्टी का हो, या हेल्थ का है, एजुकेशन का है, या जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर सैनिटेशन वगैरह है, इन सब एरियाज में गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स रहे हैं। गवर्नमेंट और प्रोग्राम्स बढ़ा रही है। पानी के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर मिशन के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो भारत ने बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किया है जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट है, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो थोड़ा सा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, जिसके बारे में हमें गर्व करना चाहिए। और दुनिया के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमने अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ, देखिए जैसे जब ये कोविड-19 का इशू हुआ तो किस तरह से हमने वैक्सीन और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ 150 मुल्कों से ज्यादा के साथ हमने शेयर किया। तो और मुल्कों के साथ भी जो है हम अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से और एरियाज में जो है अभी G20 समिट के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि किस तरह से भारत ने जो है डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दों को फोर फ्रंट पे लाया, सबके सामने रखा। तो हमने हमारी कोशिश यही रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है उनका एक ग्लोबल नजरिया उस पर पड़े और उसके सॉल्यूशंस निकले। तो हमने अपने लिए भी किया है और डेवलपिंग कंट्रीज के मुल्कों के लिए भी किया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। Towards some of the commendable things that India has done, DPI, Digital Public Infrastructure, Dr. Nayan, has been one of our biggest success stories, especially in recent times. When we say we have to grow together, the world is one family, it emphasizes shared best practices. How do you see DPI as an accelerator of SDGs, especially with countries in the global south, because a lot of them are developing nations? राजीव नयन जी, आप इसका जवाब दें इससे पहले थोड़ा तस्वीरों के बारे में बयां कर दें। थोड़ी देर में जो पहला सेशन है विचार और मंथन के लिए, वो शुरू होने वाला है और इसकी सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। P20 का जो पहला सेशन है वो एजेंडा 2030 को लेकर होने जा रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्हें हासिल करने की दिशा में और कितनी प्रगति एक तरह से हासिल करने की दिशा में और तेज़ी से किस तरह से बढ़ा जा सकता है, इस पर जो P20 देश हैं वहाँ की संसदों के प्रतिनिधि विचार और मंथन करेंगे अब से कुछ ही पलों बाद। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं द्वारका के यशोभूमि सेंटर से। एक बार मैं फिर आपका इस P20 सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। P20 की स्थापना का उद्देश्य उपस्थित चुनौतियों पर, संसदों के दृष्टिकोण पर चर्चा करने तथा इनके स्वीकार्य और स्थायी समाधान निकालने के लिए एक साझे मंच का निर्माण था। इसे G20 प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बनाया था। संसदें प्रगतिशील और जन कल्याणकारी कानून बनाने के साथ सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि सहित विकास की योजनाओं के लिए बजट आवंटन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में आज के सत्र में हमें सतत विकास के लिए संसदीय प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करने और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक्सेलेंसी, मुझे आपको ये बताते खुशी हो रही है कि भारत
सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स तैयार किया है, जो एसडीजी की प्रगति के आकलन के लिए सरकार के नेतृत्व में समय समय पर इस इंडेक्स का दुनिया के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की भावना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी कल्याण और विकास क्रियान्वयन किए हैं। एक्सलेंसी, हम एसडीजी के एजेंडा 2030 उपलब्धियों एवं तीव्र प्रगति विषय पर विचार विमर्श करेंगे। चर्चा आरंभ करने के लिए की नोट वक्ताओं से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो मुख्य वक्ता अपनी बात को 7 मिनट की निर्धारित अवधि में समाप्त करे, ऐसी मेरी सभी से अपेक्षा है। अब मैं इंडोनेशिया की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष महामहिम श्री पुआन महारानी को अपने मुख्य भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे अपर हाउस के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी से आग्रह करूंगा कि वह इस बैठक के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। Now I'll invite Her Excellency Ms. Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives, Indonesia, for her keynote address. Thank you. His Excellency Mr. Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, Excellency Speaker of the There you heard Lok Sabha Speaker Om Birla giving the inaugural address ahead of that thematic session that we've been talking about on accelerating SDGs. Yes, Dr. Nayan. You talked about digital platform. Look, and the role of India, the role India played in this field, and we are talking it in the context of P20, G20, stroke P20, G20s. The basic objective of the idea of this platform was to bridge the divide. Again, here also, very first line says that bridge the digital divide of the world. And in fact, at the national level also, you raised the issue of the country, how India has done it. So we also bridge the divide. It is not a matter or not an issue or not a practice of the privileged ones. If you go to the vegetable vendors, if you go to a beggar, some of the beggars are also carrying that QR so that you can just pay online to him. So this is the change which has taken place, thanks to whatever unfortunate that demonetization you can say, or you can say COVID-19 situation. But the crisis brought about an opportunity. Yes, crisis. In fact, even drone, which we talk about, drone also got a big boost up because of COVID-19. Sometimes it happens when some tragic situation leads to some positive developments. So no doubt about it. For years we were struggling to take the information technology to the rural side. We were not succeeding because there was some kind of resistance existing. People were not ready to accept the new changes. Technology was also not very user-friendly at that time, or even if it was user-friendly, the acceptance was very low. So what has happened, because of persistent efforts by the government or many other organizations or private sectors, I just should not say only about the government. All the actors tried, and now we have really bridged the divide. Right. And now what we are talking about, now we go to villages, you will find
When I went to my village after so many years, I was shocked to see the situation existing in my village, which was considered quite undeveloped, backward, whatever you like to call it. The people have adopted, even common people, those who are not even educated, they have also adopted digital means for transactions in our social transactions. So this is a major development. Everyone has got this system, and you will go to inside, they will find that people using internet and getting connected to the world, giving payments through this system. So this is there. So now what we want to do is to take this advantage and sharing the experience what a country like India, which is also considered not very developed, advanced, industrialized country. So that experience is to be taken to the world and especially to the global south. Global north may have its own advantages, but even within global south you will find divide existing. So, and there are several methods, like if you, again I am saying that G20 has agreed upon how it can be taken to and what precautions we have to undertake. That should be secure, safe, inclusive. So there should be a creation of repository, data should be for development. So all these precautions, there should be legal system. It should not be misused. Like once the technology comes, the pitfalls also come in. And one of these cyber security and hacking. So how to protect people from all the pitfalls, all the negative sides. So all these things have been discussed in the document. This is small, so many people may not understand that there are deeper meanings to different terms. So now they have, and that is to be elaborated upon once P20 sits, and it has got the agenda of G20 and how it can be further developed, further elaborated, and then the whole world will be one. You can transact. It is that fast-paced technology should be used by those who are called underdeveloped or those who are not called privileged. So this is the challenge, and this is one of the issues whereby you can connect to different aspects of the society, different areas of the world together. Now you can easily talk sitting in India to people in United States, in Africa. So this will help everyone, mankind. This is what Prime Minister says, that technology should be used for mankind. Recently we had a film, very famous, this generated some controversy in the West, that was Oppenheimer. So Oppenheimer had got negative side, he created the bomb. At the same time, he resisted and said that nuclear science or any science should be used for mankind. So this is also the issue, how a technology, how a science can be used for mankind, for betterment of mankind's living style, lifestyle. So this is the advantage, or this is the philosophy, or this is the message which we are trying to give through, not only by philosophy, laying down the philosophy, but also sharing our experiences with the world. So this is how India is coming in the world, on the world platform, and through G20 it is trying to intervene the global system, the global technological system, the global social system, global economic system, you can say. And this is how we are trying. We are reinterpreting lifestyles, and this is what we are contributing to the world. राजीव जी, थोड़ा सा, क्योंकि पहला सेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा फोकस हम पार्लियामेंट पे करके समझने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर बालाकृष्णन, जब हम पार्लियामेंट के रोल को समझते हैं और इस समय P20 में जो टारगेट 2030 पर बात हो रही है, इसमें जो गाइडिंग क्वेश्चंस फॉर कंसिडरेशन है, उसमें पहला है, हाउ माइट पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट्स विद द एजेंडा 2030 बी स्ट्रेंथेंड? What measures can be taken to share and adopt good parliamentary practices related to monitoring SDG implementation? पार्लियामेंट और खासकर MPs के रोल की अगर हम बात करें, वो क्या रह सकता है इन गोल्स की अगर हम बात करते हैं SDG की तो? Yes, the Parliament plays a very important role in accelerating the SDGs. Firstly, Parliament will really mobilize commitment towards the SDG, to implementing the SDGs at all levels of government, whether it's the central, state, district level, and it will mobilize the participation of people. So participation and mobilization of people in the SDG effort is very important. And for that, nothing is more important than the parliament and the parliamentarians, because they are in touch with people at their constituencies. They can, bring to the people what is the importance of the SDGs and what needs to be done at the level of even constituencies.
So this will be a tremendous contribution. Second is parliaments play a big role in approving the budget of the government at central, state, all levels. So, it is important for parliamentarians to know that SDG implementation is very important, so that allocation of funds for development, they can be increased by parliamentarians and they will not oppose it because there are so many competing demands for budgets. There is defense, there is security, but development is very important, and for the SDGs, they should be, they can play a big role in approving more funds for development. The third is the role of science and technology. See, with modern technology, you can accomplish more with less expenditure. So technology for development and for the SDGs is extremely important, because when you have that technology and you apply it, you do not have to go through the whole process which Western countries went. You can use the latest technology to produce the impact on development at a much lower cost. Example is the DPI. I will not talk about the DPI today because there is a session tomorrow on this. So parliamentarians can look at the availability of technology for SDGs. They can look at ways by which access to technology can be improved. For example, the IPR system, if we have to pay royalties for technology for development, simple technology, if they are subject to patent and royalty charges, then access becomes limited. We saw this happening during the COVID. So it's important for parliamentarians to be aware that science and technology can really shorten the path towards SDGs and with less resources. So these are a few areas where parliamentarians can play a role. But I think in this short session, we can't really discuss more. If there is more time, we can have a detailed discussion. Absolutely. Ambassador Gupta, if I may, ask you a related question as well. Parliamentarians, of course, play a key role in helping implement all of these strategies, all of these commitments made by their leaders at the G20. But the fact is, it is the parliaments that will further help in implementation through legislative practices. How can parliaments be empowered further to ensure that these commitments translate into realities? Are you talking to me? Yes, Ambassador. So, as my colleague said, Parliament has an overarching role in deciding on the programs of the government, in deciding on approving the policies, in deciding the budget of the government, how much different ministries, how much different states and so on will get. So, Parliament can legislate on different programs, what needs to be given priority, what needs to come first, how much money should be allocated. Parliament can make suggestions, Parliament can advise the government and so on. So Parliament has a very crucial role to play, in deciding on the pace of implementation of various programs in this particular scheme. बिल्कुल राजीव नेन जी, एक जो बात अभी थोड़ी देर पहले योगेश गुप्ता जी ने भी कही थी कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एसडीजी गोल्स को किस तरह से हासिल कर रही हैं, उसके लिए भारत की तरफ से भी बड़ी मदद की जा रही है। और यही कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का मैसेज भी था कि टाइम टू कम टुगेदर, वो कितना बारीक मैसेज है और कितने उसके आयाम हैं, भारत ने कहीं ना कहीं उसका उदाहरण भी पेश किया है। बिल्कुल सही आपने कहा, भारत ने अपने उदाहरण के माध्यम से एक नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हमने किस तरह से, जैसा अभी बात की गई थी कि हमने किस तरह से पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, किस तरह से भी हमने बात डिजिटल डिवाइड की थी, किस तरह से हम वहाँ पर लोगों को जोड़े हैं बाकी से डिजिटल वर्ल्ड के साथ, उसी तरह से किस तरह से हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिफरेंट आयाम्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, किस तरह से हम ले जा रहे हैं, अपने महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 35% जो हम 33% हमने अपने संसदों में हर जगह लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में हमने लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया है, किस तरह महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं, इसी तरह से किस तरह पर्यावरण में हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही हम भारत एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जो विकासशील देशों को कि किस तरह से भारत के मॉडल से, भारत के आधार पर आप भी आगे बढ़ सकते हैं और जो एसडीजी के गोल्स जितने आ रहे हैं
उसको आप बहुत ही कामयाबी से क्रियान्वित कर सकते हैं। यह भारत का संदेश है और वो बार बार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लोगों की भागीदारी, सुरक्षा, अभी देखिए सुरक्षा का एक जो पीस का वन ऑफ द एसडीजी गोल का पॉइंट्स है, और इसमें हमने क्या, अभी अगर कश्मीर को छोड़ देते हैं तो पूरे के पूरे देश में पिछले 10 सालों में हम पाएंगे कि आतंकवाद की शायद ही कहीं घटना हुआ, कभी छिटपुट एकाध घटना हो गई है कुछ, नहीं तो पूरा समाप्त होती जा रही है। किस तरह से हमने अपने नॉर्थ ईस्ट में पूरे का इंसर्जेंसी को नीचे लाया है, कैसे लाया है। एक हमने विकास का रास्ता भी अपनाया और उसमें साथ साथ कानून व्यवस्था का भी मार्ग किया है। तो इस तरह से शांति और सुरक्षा दोनों के माध्यम से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित ही किसी भी विकासशील देश के लिए यह एक भारत का जो उदाहरण है बड़ा ही अपेक्षित है और बड़ा ही सुदृढ़ और सुंदर उदाहरण है। तो यहाँ ये मैं इतना कहना चाहूँगा। राजीव जी, एक बात जो है वो ये भी है समझने के लिए कि अगर जब मैं बात को शुरू करता हूँ तो सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, मतलब हम सस्टेनेबल थे, ये भी सही है, और वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो कहीं डैमेज हुई और उसके बाद फिर से हमें सारे पैरामीटर को उसमें शायद शामिल नहीं किया जा सकता, परंतु अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन से 19वीं शताब्दी से, जो पहला कारखाना लगा, जो मैन से मशीन को बदला गया, तो तब से चीज़ें कैसे कैसे पनपती गई और आज वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। गांव में जब हम जाते हैं तो लोग सीधे बोलते हैं भाई हवा पानी सब बदल गया है, ख़राब हो गया है, भोजन खराब हो गया है। एक तो ये है जिसको आप फिर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की समस्या, ये सब बोल देते हैं। हम इस पर अगर हम बात करें, हमारे अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, मैं शांति मंत्र पढ़ रहा था तो शांति मंत्र ये कह रहा है कुल मिलाकर ओम दो शांति बृहस्पति शांति, ठीक है, अंतरिक्षध्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति। वो ये कह रहा है कि भाई जल जो है वो शांत रहे, आसमान भी शांत रहे, ठीक है, कहीं बादल ना फटें, पानी जो है वो भी शांत रहे, कहीं प्रदूषित ना हो, मतलब वो यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्याः, ये बादल जो हैं ये बरसते रहें और नदियां गतिमान रहें। ऐसी बहुत सारी बातें जब हम देखते हैं तो जो आज हम प्रकृति केंद्रित डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उन पर हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा पुराना समाज अपने पोखर को बचाए हुए था, अपने कुएं को बचाए हुए था, अपने खेत खलियान की मिट्टी को बचाए हुए था, यहाँ तक कि अपनी हवा को बचाए हुए था। और डेवलपमेंट की अगर एक बात है तो उसमें एक जरूर हमें समस्या दिखी, वो है कनेक्टिविटी की। मतलब कई बार लोग अपने गांव को ही अपना देश समझ रहे थे, तो लोगों को बहुत बाद में पता चला कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है, वहां के कुछ लोगों को पता चला कि भारत नाम की भी कोई जगह है। लोग खोजने के लिए निकल पड़े और ये खोज कोई हजारों साल पहले नहीं हुई है। दुनिया को मानव ने एक दूसरे को शायद 400, 500, 600 साल पहले ही देखा है पूरी तरह से। कहीं कोलंबस आया 1492 में आया अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो सब कनेक्टिविटी और उसके बाद फिर आज जिस लेवल पर हम पहुंचे हैं, तो आज सबको, पूरी दुनिया को इसलिए ग्लोबल विलेज भी कहा गया। और जब हम इस तरह के इनिशिएटिव देखते हैं, P20, G20, UN, तो ये सब लगता है कि आज पूरी दुनिया को, आज नहीं तो कल, पूरी तरह से अपने मन को भी मिलाकर, अपने विचारों को भी मिलाकर, अपने कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब थॉट टू एक्शन एक साथ इकट्ठे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा एक दो मुद्दे पर मैं उसी रास्ते पे हूँ, लेकिन थोड़ा अलग हटकर बात करूँगा। आपने कही, बाकी सारी बातों से माना कि किस तरह से एक लोप साइडेड जो डेवलपमेंट कहते हैं, एक जो गलत जो विकास का हमारा माध्यम हुआ था, उसके चलते हमारे सारी समस्याएं आई। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा क्या कनेक्टिविटी नहीं था। देखिए, व्यापार पहले भी होता था और हमारा व्यापार देखिए बहुत दूर तक चला गया था, और व्यापार के माध्यम से ही हमने अपनी संस्कृति भी चारों तरफ फैलाई थी। देखिए, एक समय ऐसा था कि यूरोप, जिसे आप कहते हैं ग्रीस कहते हैं, वह अपने आप को यूरोप का हिस्सा नहीं मानते थे। वह मानते थे कि वह एशिया का हिस्सा है, और सांस्कृतिक रूप से युद्ध भी होता था, लेकिन युद्ध के अलावा कई बार हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोल दिया करते हैं। लेकिन वहाँ का जो अब वर्ड, आज का शब्द जो बहुत जोर से यूज होता है, सब बोला जाता है नैरेटिव,
नैरेटिव का वर्ड शब्द जो है ग्रीक वर्ड नैरेटस से हुआ था, हाँ। जो कि एक तरह से नारद, हाँ। जो हमारे यहाँ नारद थे, नारद से ही नैरेटिव उठा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो दौर था उसमें राजा कनेक्टेड रहे होंगे, व्यापारी कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन ये वो दौर है जिसमें हर आदमी कनेक्टेड है पूरी दुनिया से। तो निश्चित ही देखिए, जब आप तकनीकी का विकास करेंगे, बिल्कुल, तो इस तकनीकी के विकास से, और जब उस तकनीकी का जो अभी हमने तुरंत बात की थी कि एक जो डिवाइड था, जो कि केवल कुछ लोगों तक ही अगर तकनीकी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पर एक खामी रहेगी, एक जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो गड़बड़ रहता है। लेकिन जब एक्सेस सबको है, जो पहुंच सबको है उस तकनीकी का, तो निश्चित ही बाकी आम आदमी भी इसके ऊपर बढ़ेंगे और उनको वो भी इसको लेके इसका इस्तेमाल मतलब यही सबका साथ सबका विकास जो है, जनतंत्र का जो है, जनतंत्र का मंत्र यही है कुल मिलाकर। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दिल्ली में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन दुनिया भर की विभिन्न संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि P20 सम्मेलन भारत की भूमि पर हो रहा है, जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराता है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ा है। और ये जो प्रधानमंत्री का जो हजारों निर्दोषों की जान ली है, संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था, और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है।
हमारी पार्लियामेंट वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यही हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और सूचनाओं के प्रसार पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहां सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेस में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेस में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। साथियों, समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है।
भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में उसमें से 70% के आसपास का टर्नआउट ये दिखाता है कि भारत में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर लोगों को कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियों, सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। Hello and welcome to Sansad TV. I'm Rini Chaudhary, with me is Ramveer Shrestha, and we are talking about the 2030 Agenda for Sustainable Development. The 2030 Agenda was adopted unanimously in 2015 by all United Nations member states. They are a call to action to end poverty and inequality, to protect the planet and ensure that all people enjoy health, justice and prosperity. To enrich our discussion today, we have with us 4 esteemed guests. Dr. K. Sita Prabhu, Co-Chair, LIFE, RVW Task Force T20. Shambhavi Nayak, Co-Chair, Accelerating SDGs Task Force T20. Dr. Nitya Mohan Khemka, Co-Chair, Accelerating SDGs Task Force T20. My first question this afternoon is to Dr. Nitya Mohan Khemka. Ma'am, let us start at the very basic. Why are SDGs important for the world today? Thank you very much, Rini. The SDGs are extremely important because, they have extended largely before the SDGs. Let me rewind a little bit. We had something called the MDGs, which were a global campaign from 2000 to 2015 to tackle, many dimensions of poverty, and they ushered a new phase of global development cooperation. But after the post-2015 development agenda, we had something called the SDGs after the Rio +20 summit. And the SDGs are very critical because they extend beyond the largely social focus of the MDGs. And the SDGs set global priorities around things like the social, the economic, as well as the environmental dimensions of sustainable development. So in addition to the 5 social goals of the MDGs, the SDGs also include 5 environmental goals, 5 economic goals, and 2 new goals on partnerships, peace, justice, and institutions. So while there may be many similarities in the format of the MDGs and the SDGs are dimensionally different. And they form the blueprint for the world. And their main focus on reducing inequality and leaving no one behind on the path to sustainable development is very key. बिल्कुल। और आपको हम ये भी सुनवाते हैं कि आज जब P20 का पहला दिन था, उद्घाटन सत्र था, इस मौके पर देश की जो लोकसभा है उसके माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 144 करोड़ भारतीयों की ओर से P20 के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ खास कहा, ये भी सुनते हैं। एक्सेलेंसीज, एक बार मैं फिर आपका इस P20 सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। P20 की स्थापना का उद्देश्य उपस्थित चुनौतियों पर, संसदों के दृष्टिकोण पर चर्चा करने तथा इनके स्वीकार्य और स्थायी समाधान निकालने के लिए एक साझे मंच का निर्माण था। इसे G20 प्रक्रिया को
मजबूत करने के लिए बनाया था। संसदें प्रगतिशील और जन कल्याणकारी कानून बनाने के साथ सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि सहित विकास की योजनाओं के लिए बजट आवंटन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में आज के सत्र में हमें सतत विकास के लिए संसदीय प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करने और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक्सेलेंसी, मुझे आपको ये बताते खुशी हो रही है कि भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स तैयार किया है, जो एसडीजी की प्रगति के आकलन के लिए सरकार के नेतृत्व में समय समय पर इस इंडेक्स का दुनिया के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की भावना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी कल्याण और विकास क्रियान्वयन किए हैं। एक्सलेंसी, हम एसडीजी के एजेंडा 2030 उपलब्धियों एवं तीव्र प्रगति विषय पर विचार विमर्श करेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार अपना नज़रिया किस तरह से सतत विकास हो, टिकाऊ विकास हो, इस पर रख रहे हैं। हम मानसी केडिया की तरफ जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे, मैडम, जो मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूं वो एक ही ब्लॉक में रखी जा सकती हैं। उसमें भूख है, उसमें गरीबी है और उसमें स्वास्थ्य है। इन तीनों से निपटने के लिए पूरी दुनिया जब इकट्ठी आएगी तो ये तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें सब जगह नहीं है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर ये सब चीज़ें हैं। पूरी दुनिया को किस तरह से पैटर्न सेट करना होगा, किस तरह से उनसे निपटना होगा, सबसे बड़ी बात यह है। जी 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 मानसी जी, डॉक्टर के सीता मुझे सुन पा रही हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दे सकें? ये आपने जो कहा, दिस हेल्थ एंड एजुकेशन, द एसडीजी गोल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोविड-19 के बाद बहुत कुछ बदल गया है एंड एसडीजी का प्रोग्रेस जो है, जो हम चाहते थे, वो रिवर्स डायरेक्शन में चला गया है। सो ये रिवर्स डायरेक्शन से हमें उसको रोकना है और आगे बढ़ाना है। और एसडीजी एक्सेलरेशन की बात अभी हो रही है, क्योंकि हम जिस तरह से अभी गति हो रही है, ये प्रोग्रेस देखेंगे तो हम 2030 तक हमारे गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमें डबल द एफर्ट्स अभी करना होगा जी। और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि पॉवर्टी कोविड-19 की वजह से, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फूड प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से बढ़ गया है, पॉवर्टी बढ़ गया है, हंगर हैज आल्सो गॉन अप। फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फाइंड दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द पास्ट 2 years हैज डिक्लाइंड रादर देन इंक्रीजिंग। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें अगर सोशल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है तो एसडीजीज के गोल्स और टारगेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम ध्यान दें और हर कंट्री को इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू मैम। You are talking about the importance of international collaboration and cooperation in addressing the challenges at this juncture. So my next question is to Shambhavi Naik. What do you think is the importance of multi-stakeholder partnerships, especially with governments and parliaments, non-governmental organizations?
what is the importance of having this kind of cooperation to help us in accelerating the SDGs and overcoming the challenges that the co-panelist has just mentioned? Of the Russian Federation for her intervention. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Сотрудничество между странами группы 20 играет важную роль в определении курса, которым движется мир. Особенно сейчас, когда сохраняется серьезный... बिल्कुल। डॉक्टर के सीता, आप हमसे जुड़ी हुई हैं और जो सवाल अभी रखा गया था, इस सवाल का जवाब आप दें। डॉक्टर के सीता। मैं आंसर कर सकती हूँ, वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में जी जी। हाँ, तो मैं सीता मैम भी बोल सकती हूँ। मैं I think the question was on how and what does international collaboration and multi-stakeholder partnerships, what can they do to achieve the SDGs? Right. And I think that, this is a very key question. I think multi-stakeholder partnerships are very pivotal for achieving the SDGs. And this is for several reasons. Firstly, the SDGs have a global scope. The problems we are looking at are global in nature: climate change, poverty reduction, health crisis. All of this transcends national boundaries. So solutions also require international cooperation, they require pooling of resources, they require exchange of best practices. Secondly, I think leveraging of resources is also key. So when we come together, when we pool our resources, these efforts can really lead to economies of scale and more efficient use of resources and faster achievement of outcomes. And also collaborative actions often have greater impact. And I think also strengthening accountability. When we come together to joint actions and form partnerships, we can really foster mutual accountability and we can hold each other accountable and create a sense of shared responsibility. Regarding progress, आपने progress के बारे में भी सवाल पूछा कि कितना progress global communities ने किया. Or I think, there is positive momentum around it. There have been examples of significant multi-stakeholder initiatives and partnerships. जैसे कि वो Paris Agreement हुआ था climate change के ऊपर, which had support of almost all nations. And there have also been numerous public-private partnerships to address issues like global health, clean energy. आप COVID-19 को देखिए, सारे दुनिया इकट्ठे आके वैक्सीन को डेवलप किया. But notwithstanding, I think, there are several challenges. Sita ma'am ने कहा कि जो war है, geopolitical tensions है, nationalistic policies है, and different interests can really complicate this international cooperation. So I think when there is notable progress, there are examples of how we can do it as a humanity together to shoulder the partnerships towards the SDGs. We have a long way to go, and the global community really needs to come together to reinforce its commitment to ensure progress. I also would like to say that the question of SDG achievement depends a great deal on resources. Because developing countries right now have burdened with huge public debt because of the various reasons that have already been mentioned, and they are not in a position to increase the resources that are required for achieving the SDGs. For India, for example, they say there is a huge requirement of 2.4 trillion, that is required to achieve the SDGs, or 170 billion, according to some estimates, every year. India is able to put in resources of about 25% of that into its SDG achievement. The private sector is also contributing to some extent, but it may have to really ramp up its investment in the SDG sectors if we are to really seriously think about achieving the SDGs. So I think financing from the developed countries, from the international financial institutions towards the developing countries which have a huge burden of deprivation is required. And that partnership is still yet to take off because commitments towards financial resources have not yet been fulfilled. The developed countries have not yet been able to put in their share of resources to enable the developing countries to meet their SDG goals. I think this is one important aspect that needs to be worked upon in the future. The Accra Accord had laid down certain principles, but that needs to be put into action. The G20 summit in India had also flagged this issue a great deal.
I Right, would also ma'am. like to add just on the progress of the SDG Taking goals. over from So the there was a UN question General Assembly. that we just discussed, you mentioned how the countries today have very diverse socioeconomic landscapes, especially in the context of the G20 grouping itself. And with the Parliamentary Speakers Summit underway, how can we ensure that the goals that have been outlined in the 2030 agenda are effectively integrated into national policies and strategies of these countries, given the diversity of the socio-political fabric of these countries? My question to Dr. K. Sita again, please. I think the importance is to look at how the countries can actually ramp up their policies in order to meet the SDGs. International cooperation in one aspect, and each country, for example, will have to look at its own policies in terms of attaining sustainable consumption and production. The G20 India presidency had put out a very revolutionary idea of lifestyle for environment. I think that is something that we need to look at much more. बिल्कुल। और हम एक सवाल जो है, नित्या मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्या, और ये एक समझने वाली बात है, एक मौलिक सा सवाल ये भी है कि जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, इसकी तरफ जाना, इसके बारे में सोचना, ये पूरी दुनिया को क्यों महसूस हुआ होगा? क्या ये एक मौलिक सा सवाल, क्या ये इसलिए भर कि भाई दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, इसलिए उन्हें कोई मानवता के लिहाज से कोई ऐसा इल्हाम हुआ, या ये बात उनको समझ में आई कि ये करना चाहिए, या ये आज की दुनिया की जरूरत है? क्योंकि अगर कहीं पर भुखमरी होगी, कहीं पर कुछ अशिक्षा होगी और कारण होंगे, तो विस्थापन होगा, और इस तरह शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी, और कई सारी समस्याएं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ जाती है, जिनकी चर्चा बहुत लंबे टाइम तक की जा सकती है। जी नित्या मोहन जी। तो आपने आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। एसडीजीज कई कारणों से दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कि ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, they give us a universal framework for addressing many pressing global challenges, including आपने कहा poverty, hunger, inequality, climate change, environmental degradation. तो बहुत कारणों के लिए बहुत important है, blueprint provide करता है दुनिया के लिए। दूसरी जो है, they promote, SDGs are very important because they promote a holistic approach to development, and this recognizes the interconnections between the social, the economic as well as the environment. तीसरा जो है, ये जो सबसे important चीज है, they emphasize leaving no one behind, ensuring the progress benefits all, especially the most vulnerable. जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो यही है credo SDGs के, serving the last mile, leaving no one behind. और आखिरी बात ये है कि SDGs can also lead to a more peaceful, equitable and sustainable world for future generations. और जो सीता प्रभु मैम ने कहा कि financing is key, that is really the elephant in the room to find the resources in order that we achieve the goals. बिल्कुल। Right. Dr. Nitya Mohan, continuing with you, you talked about leaving no one behind, and that is absolutely one of the cornerstones of our sustainable development goals. And one of these specific divides that we talk about bridging is that of gender. So gender equality remains one of the linchpins of the sustainable development agenda. And women-led development is also one of the themes of the ongoing P20 summit. Ma'am, what policies and initiatives do you think G20 countries can implement to advance gender equality and to empower women and girls, not just in society, but also in terms of economic and political spheres? And this, again, becomes important in the context of India having successfully passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam during the special session of Parliament just last month. So, given the strides that we are making within our country and similar steps that other countries in the G20 grouping are also taking, how can these efforts contribute to furthering the 2030 Agenda for Sustainable Development? Thanks, Rini. And I think you raised a very important point about the G20 presidency in India, where there's been a monumental shift, I think, from women's development to women's-led development. And this means that women are key drivers for growth and development. They're just not passive recipients of welfare measures.
In terms of what policies we can implement in order to have gender transformative outcomes, I think one of the crucial steps towards gender inequality is to enhance the economic opportunities for women. Numerous studies have shown that when women are economically empowered, societies prosper as a whole. In fact, there was a recent McKinsey study that said that if women were offered equal opportunities in India, India could add nearly 770 billion to its GDP by 2025. Right now, women's contribution is only about 18%. So education and employment are obviously key. We need things like financial literacy, vocational training, business development in order to provide women with the necessary skills. We need to facilitate women's participation in the workforce. Access to finance is key. India has again made huge progress in this. 70% of the collateral-free loans given to women under the Mudra scheme have been given to women. So, again, in terms of financial inclusion, I think India is leading the way. Over 350 million bank accounts opened recently. A lot of it goes to women. Second thing is you mentioned, that this policy making representation is key. There's been the landmark Nari Shakti bill. And I think that empowering women in economic terms, in political terms, as well as in social terms, leads to greater provision of public goods, even in terms of water and sanitation. We have 1.4 million women of the 3 million women appointed to local political positions worldwide. 1.4 million come from India. So it really reflects our acceptance of female political leaders and what that means as role models for girls in societies. And even in countries like Rwanda, we've seen where the number of female politicians and lawmakers have increased. This has had a direct link to further gender equality by implementing progressive reproductive rights as well as equal land rights for women. And finally, I just wanted to make a point on education and skill development. I think it's again very key that 40% of the global labor force and more than half of the world's university students are women. Yet, in terms of access to the fourth industrial revolution, women have a huge gap to bridge. And hence increased skill enhancement and talent utilization will increase overall productivity. बिल्कुल, हम आपकी तरफ फिर आएंगे एक बार। शांभवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शांभवी, हम ये भी एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है देश के अंदर, तो ये कहा जाता है कि भाई देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। केवल देश में नहीं बढ़ा है, दुनिया भर में बढ़ा है। जब हम छोटे थे तो तब ये आंकड़ा था कि 85% लोग गाँव में रहते हैं, आज 72% रह गए हैं। दक्षिण भारत के अंदर तो वहाँ 50% होने को है। और दुनिया की तस्वीर जो है पूरी तरह से ऐसा है कि जहाँ रूरल जो एरिया है वहाँ पर ना के बराबर लोग रह गए हैं। लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति हुए हैं APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने एक पूरा नाम का विचार इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अर्बन या रूरल, इसकी जगह उन्होंने रर्बन का आइडिया दिया कि ऐसी मानव बस्तियां जो पूरी तरह से डेवलप हों, ऐसे ब्लॉक हों उनके, जहां पर वो एग्रीकल्चर और अर्बन दोनों मिलाकर के वो एक साथ कुछ ऐसा मिक्सअप उसका हो। ये क्या आपको लगता है कि ये भी एक दिशा होगी अगर हम शहरों की, जिस तरह से शहर ये बातें आती हैं कि आबादी का बोझ, अंतहीन आबादी का बोझ नहीं संभाल सकते? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो SDG गोल नंबर 11 है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये इसके तहत आएगा। क्योंकि हम जैसे जैसे ऑल ग्लोबलाइजेशन होता है और अर्बनाइजेशन होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जो हमें चीजें लगती है टू कीप अ सोसाइटी अलाइव इन हाईली डेंस सोसाइटीज, उसके वजह से शॉर्टफॉल्स होते हैं एक्सेट्रा। सो वो जो पूरा सप्लाई चेन भी हमें सोचना पड़ता है। सो इस सब के तहत सस्टेनेबल सिटीज अगर हमें बिल्ड करनी है तो उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन रहा है टू ईट लोकल, एंड इसके लिए भी एग्रीकल्चर लोकली प्रोड्यूस्ड होना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशियस खाना बहुत जरूरी है। सो इस सब के तहत आई थिंक सस्टेनेबल सिटीज के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हम सिर्फ बिल्डिंग्स ना बनाएं, उसमें पार्क्स हो, उसमें कम्युनिटी सेंटर्स हो। एंड ऑन द फ्लिप साइड जो विलेजेस है जिनको अर्बनाइज करना है, उसमें हेल्थ केयर, अच्छे स्कूल्स, एजुकेशन इज गोइंग टू बी ऑफ पैरामाउंट importance, so that they also get access to a good standard of living. Right, ma'am. Continuing from what we were discussing, my question to Dr. K. Sita,
We've been talking about sustainable urbanization, about the sustainability of our globalization initiatives. And some time ago, we talked about COVID-19 and the scar that it has left on the world, the impact of which many countries are still reeling from. So while we talk about sustainability, a related term that comes up in our conversation is the idea of resilience, especially in the context of climate change, environmental conservation. So what exactly, ma'am, do we understand by the idea of putting the world on a more resilient track, and what does that mean for our future generations? Thank you very much. It's a very important concept that you have raised, that particularly at the current juncture, when climate change is creating havoc. You see the Sikkim floods that have come, flash floods that have come suddenly, and the ability of people to rebound to the and build their lives is a resilience. How quickly are they able to meet the situation and bounce back? Now, this was used mainly in the disaster management terminology. Now it is being used everywhere because climate change has no boundaries and it does strike unexpectedly everywhere. Now, for resilience to be there, it is not only governments and private sector that can support people at the time of catastrophic climate event or any other livelihood affecting event, but it is the communities that can actually take charge, and their capacities do matter whenever there is resilience is to be built up. We have excellent examples within the country. If you look at Odisha, the disaster management method of community-led disaster management is one of the world's best examples, and many countries have come to study that. And more recently in the COVID-19, that you find that in Kerala, the Kudumbashree women, community-led provision of care, provision of vaccines and others at the doorstep for senior citizens, and managing the community kitchens. This has been one of the ways in which Kerala has been able to manage COVID-19. So I think the question of bouncing back from unwarranted situation, climate change induced disaster, or any other crisis that comes to hit the population, how is it that you are able to bounce back? That is resilience that building for at all levels. It is not only government's responsibility, it is the community also that needs to take charge of its life and try and see how best mechanisms can be incorporated, capacities can be built up, especially to protect women, children, and senior citizens in the event of a disaster. I think it is very important as in the years to come that we build such resilience among communities. बिल्कुल, एक बात और भी है, और मैं एक बार फिर से नित्या मोहन के पास जाना चाहूँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो सतत विकास के लक्ष्य रखे गए हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, एक एक समस्या को अगर आप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और वो भी वर्ल्ड वाइड, एक गांव की समस्या हो तो समझा जा सकता है, और ऐसे में आपको कुछ ऐसे की पॉइंट समझ में आते हैं जिनको हम सॉल्यूशन के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए कि परफॉर्मेंस काफी डिस्परेट है। आपने कहा कि हमने वी हैव टू डू क्वाइट अ लॉट टू गेट टू वेयर वी वर, बिकॉज कोविड हैज created a lot of problem and has put us behind, in many senses. But I think that one of the main reasons for this disappointing performance across SDGs in the world over the last 8 years has to do with the deep and intersecting inequalities that plague our societies. And these inequalities, we have caste, we have ethnic differences, we have gender distinctions. These have influenced opportunities for employment, for income, for access to education, and I think, clean water, as well as political voice. And all of this suggests that I think the reduction of inequalities is not a separate goal. It's a key goal in itself. It's a crucial underlying factor that affects the ability of any country to achieve sustainable development in general. So, it's obvious that urgent, systematic, as well as committed public action is required if the world has to meet or can come even close to achieving the SDGs. So I think one thing that we can do is to bridge
this inequality. I think India's done a lot already, particularly in serving the last mile recently in terms of the policy and the legislation. But we have whiles to go in closing this gap of inequality. Right. Thank you, ma'am. My question to Shambhavi Naik. We have been talking about bridging inequalities. And again, we keep coming back to the question of COVID-19 and the impact it had. But one thing that COVID showed the world was also the way in which technology can come in rather unprecedented and innovative ways to help bridge some of these divides. And even where the Agenda 2030 is concerned, innovation and technology play a crucial role in helping us achieve some of these sustainable development goals. So how do you think nations can promote innovation and harness emerging technologies to address some of the pressing issues that confront us today? Thank you for a very important question. As part of our task force, when we developed our statement, developing a technology-enabled ecosystem was one of the core tenets that we thought would be necessary to actually progress on the SDGs. And I would like to answer that question using the example of biofuels, because biofuels, I think, are a really great example of how we are harnessing new technologies. We are trying to research on doing more technologies so that the impact of actually creating biofuels by themselves also is reduced. And at the same time, we are trying to replace fossil fuels. And India is leading this, right? So at the G20 summit, we obviously announced the Global Biofuel Alliance. And this is going to be a global consortium where people are going to exchange best practices on developing biofuels, on developing the biomass or whatever feedstocks we use. And India is already moving pace with it. We announced that we're going to have a biorefinery using bamboo in Assam that is going to start in March. And I think the technology cannot be dispersed. It has to be a global technology that can work across sectors, across nations, that can be deployed as efficiently in India, in the US, in Australia, and in Africa, and in Latin America. And we need to start funding R&D a lot more than we are currently, so that we can look at some of these global challenges and do research and come up with innovative solutions that can be deployed the world over. जी, एक बात और भी है जो समझने की है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए समय भी बहुत लंबा नहीं है, ऐसे में क्या आपको, अगर हम हिंदुस्तान की, भारत की बात करें, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ऐसे ही जो देश के अंदर 3.5 लाख ग्रामों की सरकारें हैं, फिर शहरों के, छोटे छोटे शहरों की सरकारें हैं, कस्बों की सरकारें हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका, ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये जो इन्हें हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथन करके हम इस लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर सीता? जी बिल्कुल, क्योंकि लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. In fact, many states in India have already taken up this task of localization. Assam has already started looking at it. In Maharashtra, I am glad to be associated with a project where localization of SDGs is happening at the block level, not even the district level, in 13 aspirational districts, 27 blocks within them. We are preparing SDG mapping, mapping the schemes that are available to SDGs, and also preparing dashboards so that they can be continuously monitored. Unless the local community owns the SDGs, it is not possible to achieve them at any level. I think this is one important lesson that we have learned from the past, that it is at the local level that action happens. And in a vast country and in a diverse country like India, with various climatic conditions prevailing, various resource constraints that operate, it is important that there is localization of SDGs. And I'm glad that the state governments as well as the government of India, the Niti Aayog, has given great deal of importance to the localization of SDGs. But this requires capacities at the local level. And I think the partnership between academic institutions, policymakers, and the local governments will enable the synergies to be reaped and planning to be done at the local level for SDG monitoring. And it's already started, it's happening, it needs to gather speed. Right, ma'am.
So we're talking about India's experience with implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. Dr. Nitya, India's development journey must hold many lessons that other nations, especially other developing countries, would gain greatly from as they try to strive forward to attain or achieve the SDGs at their respective ends or in their own journeys. And they're all trying to do this in an inclusive and sustainable way. So how do you think the lessons gleaned from India can actually help them in their own journeys? What is your take? And I think, India has made considerable progress to achieving the SDGs. Obviously, we have many challenges. But because of the scale of the population, we are the world's largest democracy, second most populous country. We have so many lessons for the world. India has lifted huge numbers of people beyond poverty over the last few decades. The government has implemented various schemes to tackle poverty. Obviously, the challenge still remains, but I really think that one thing for the world is India's commitment to inclusive development, particularly in education and health, we've seen is commendable. Inclusive development is economic growth that benefits the widest range of people, including the marginalized, the most vulnerable in society. It seeks to reduce inequalities. It seeks to ensure that no one is left behind in the process of development. This is very consistent with the Prime Minister of India's credo, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. And I think recent policy initiatives in India have really shown a strong commitment towards achieving inclusive development. In health, we've shown the way in COVID management. In education, also there are numerous, progress. India's made significant progress in improving access, quality of education. We have, things like the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which provides insurance cover for over 100 million families. We have Ayushman Bharat, which is a very ambitious initiative that aims to provide free healthcare for over 500 million people. It's really the world's largest government-sponsored healthcare scheme. So clearly a lot of lessons for the world from India. जी श्याम भवी, एक बात और है जो डॉक्टर सीता के साथ ये बात इससे पहले एक सवाल मैंने किया भी था कि जब बहुत बड़ा लक्ष्य है तो उसमें हमें जन भागीदारी को बढ़ाना होगा और वो जन भागीदारी के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है, लोकल गवर्नमेंट हैं, हर गांव की अपनी सरकार है, हर शहर की अपनी सरकार है, लेकिन उसको इफेक्टिवली वो काम कर सके इसके लिए भी थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि किसी राज्य में लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से काम क्यों कर रही है और किसी राज्य में वो क्यों नहीं कर रही हैं या कम इफेक्टिवली काम कर रही हैं। तो दोनों में वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना और फिर सबको साथ में आगे की तरफ बढ़ाना, ये कैसे संभव है? जी, और एक ये भी देखना चाहिए कि हम जो एसडीजीज का प्रोग्रेस देखते हैं वो इंडिया में भी यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम है। और उसका एक कारण ये भी है कि सबकी क्षमता अलग अलग है, सबके चैलेंजेस अलग अलग है। कहीं पे एजुकेशन ज़्यादा है, कहीं पे हेल्थ केयर ज़्यादा है। सो अगर हमें ये सब सॉल्व करना है तो वी हैव टू टेक अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स और फिर उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रिसोर्सेज देने चाहिए। सभी जगह एक ही सोल्यूशन देके फायदा नहीं है, क्योंकि जो चैलेंज है उसको टैकल करने का रिसोर्स देना जरूरी है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई थिंक व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द P20 टू डू एज to look at, because it is the voice of the people, is that it is the correct forum which represents all of the districts and all of the states. And so they are the best suited to kind of understand what are the problems and what are the resources that they need to solve those problems. Right. Moving ahead, my question to Dr. Sita. We have been talking about the lessons learned and also how the performance across countries and even within a country, how the performance across sectors have been disparate owing to different kinds of challenges. So the global community has to meet its goals by the year 2030. And as we have been discussing a short while ago, time is of essence. So what do you think are the key takeaways from the exercise, implementation exercise so far? And building on that, what can be done better over the next 7 years? Two things I think are very important. First, to recognize the synergies between the goals. Goals 1 to 7 are highly synergistic. They're interlinkages. So it is not right to focus only on one or the other of the goals, and the linkages between them have to be looked at and worked upon simultaneously.
ये नहीं कह सकते हम एजुकेशन देखेंगे या हेल्थ देखेंगे, सबको साथ में लेना होगा और उनके सिनर्जीज जो हैं उस पे हमें काम करना होगा. Second aspect is that you have to involve people in the entire exercise. Otherwise, it will not be possible. And international cooperation is of key importance here. It is not that every country is on its own and it tries to pursue as it is. These are global goals, they are global commitments, and there has to be a global support as well to enable the countries to achieve the SDGs. It is absolutely essential that there are mechanisms which support countries which are lagging behind, either from the international financial institutions or from other sources through research, through capacity development, like India has been providing that support to many of the African countries. I think we need to have a greater cooperative framework across countries and within countries to achieve the SDGs. It has to become a movement or where everyone is involved and take this seriously. Otherwise, in the pursuit of other goals, such as maintaining your economic growth, maintaining sustainability, there is a fear that SDGs may fall behind. And one of the most important things is we must recognize that climate change is now upon us, and we are already at 1.2 degrees Celsius global warming. And if we do not act now on all the goals, including the climate goals of the SDGs, we will very soon be at a stage where we are at an existential crisis. So I think it is important. Already scientists have warned that 6 out of 9 planetary boundaries are something we have already crossed, and we are fast reaching a state where the Earth would be spin out of control. So I think achieving the SDGs is one way of ensuring sustainable consumption, sustainable production, complete change in the way of life that we adopt, particularly in developed countries, which have contributed a lot to the accumulated emissions in the environment. So I think it is necessary for international cooperation on a much larger scale, including financial as well as non-financial resources, and as a common goal and as a common ambition that countries of the world will look at. And this is the call already in the September 2023 summit at the UN of acceleration of action on SDGs. I think that is the need of the hour, how to accelerate progress. जी, एक बात और देखने के लिए मिली डॉक्टर सीता, मेरा भी सवाल ये आपसे ही है। भारत में एक पहल हुई स्वच्छता को लेकर के और उस पर एक प्रतियोगी भावना जो है वो की गई, एक कॉम्पिटिटिव एक अप्रोच उसमें देखी गई। हर जिले में एक कंपटीशन था और ये लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी कि कौन सा जिला जो है वो स्वच्छता के पैरामीटर्स को बीट कर रहा है, compete कर रहा है। और हमने देखा देश में भी चर्चा इंदौर की हो जाती थी, विदेश में भी चर्चा इंदौर की हो जाती थी। और इस तरह से क्या आपको लगता है कि जो मैंने बात कही शुरू में कि जो लोकल बॉडी हैं या फिर जो इंक्लूसिवनेस है उसमें एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम जो है अगर वो बनता है और उसको टारगेट दिए जाते हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ऐसे में लक्ष्य जो है वो शायद और नजदीक आएगा? जी, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल है नीति आयोग की, along with cooperative federalism. There is a SDG index that is the country prepares at the state level, and the states are also looking at it at the district level. तो monitoring जब indicators पे data हो तो monitoring हो सकता है। So सबसे जरूरी है कि हम systematic तरीके पे data इस पे collect करें, उसको dashboards में डालें और local level पे, ये पंचायत level पे उसका monitoring हो और हम लोग देखें कि प्रोग्रेस ऑन मंथ टू मंथ बेसिस कितना हो रहा है और कौन से प्रोग्राम्स को हमें मॉनिटर करना है। एवरी एसडीजी इज लिंक्ड टू सर्टेन प्रोग्राम्स. हाउ इज इट दैट वी मॉनिटर दिस प्रोग्राम्स सो दैट प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक्ड एंड देयर इज हेल्दी कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस अ स्टेट एंड अक्रॉस स्टेट्स विद इन अ कंट्री एंड बिटवीन नेशंस एज वेल. आई थिंक मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है कि डेटा कलेक्ट करना है, सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करना है, उसको डैशबोर्ड्स में डालना है और उसको मॉनिटर करते रहना है फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज हैपनिंग इन सम ऑफ द स्टेट्स ऑलरेडी.
As I said, in Maharashtra, the dashboards are being prepared already. In Assam also they're doing it. And I'm sure that in many other states, at the local level, district level, and now taluka level, the monitoring is happening. But we have a large number of schemes, and to consolidate them and to monitor them becomes a huge task. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीता शांभवी नाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नित्या मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सतत जो विकास का लक्ष्य है उसमें अपना नज़रिया रखने के लिए। और एक बात जो है, जो डॉक्टर सीता ने भी कही कि एक तरह से जो लोकल बॉडीज़ हैं वो रीढ़ हैं किसी इस सब चीज़ को अगर वहाँ पर खड़ा करना है, इस्टेब्लिश करना है, इसमें सुधार लाना है, तो लोकल टू ग्लोबल जाना ये आसान होगा। तो ये यात्रा तब संभव हो पाएगी अगर स्टेट वाइज उन्होंने कहा कि जिले पंचायतों पर नज़र रखें और पंचायतों में भी एक पार्टनरशिप हो और उनको स्ट्रेंथन किया जाए, तो लक्ष्य और भी ज़्यादा नज़दीक आता चला जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इस कार्यक्रम में मेरे साथ रिमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।